Good morning, and today we are going to start the topic reflection, which is the last topic. I discussed with you earlier light, property of light, that it travels in a straight line, shadow, characteristics, and conditions uh, due to which the shadow is going to be formed. This we have studied. Now, reflection. So, for understanding reflection, what we need to know is to know about mirror, right? So mirror are what? These are the small glass pieces, okay, and they are coated with silver polish. So glass pieces, ordinary glass pieces, which seems to be very ordinary, but when they are coated with what? Silver or aluminium, they give they make them what? Opaque, coated with silver. Okay, so suppose this is a glass, ओके, ऑर्डिनरी ग्लास, और उसको जब आप पॉलिश कर देंगे, उसकी एक साइड आप पॉलिश कर देंगे, तो व्हाट यू विल एंड अप विथ, यू विल हैव अ मिरर विच विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. लाइट को अलाउ नहीं करेगा. इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? एज इट इज वेरी शाइनी, वेरी स्मूथ, द सर्फेस इज वेरी स्मूथ एंड अ शाइनिंग सर्फेस. सो व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी? that when light falls on it, suppose light is coming from this side, this is a mirror, and light is coming from this side, it strikes the surface of mirror, okay, this is our point source. So it will be what? It will be reflected back. This is the direction of ray, light ray, which incident on mirror, okay, and it reflected back in different direction. This property is known as reflection. So what is reflection actually? Reflection is the bouncing back of light when it falls on the shining surfaces. So what is reflection? Okay, give me a point. So this is the definition of reflection, that it is the bouncing back of light when it falls on smooth shining surfaces. Now, do you know that moon is also is not a luminous body? Moon, which we have already covered, that moon is not a luminous body. It is non-luminous. Okay, but still moon has its it appears that it has a light, okay, very soft light, which is soothing for our eyes, okay. So the reason is what? That this is sun, suppose this is sun, right, and there is earth right here, okay. Don't go by shape ke kitna sun is very far from earth, that is why it appears very, very small. And this is your moon. This is earth. You can, once you understand the phenomenon of reflection, you will understand that this is a sun, which is a very big source of light. When light falls on the surface of earth, there is day. आपने circle of illumination पढ़ा ही होगा, which divides the earth into two equal halves, day and night, है ना. तो यहाँ पे तो डे है अभी, बट इस जगह क्या है? जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है वहां है नाइट. उस एरिया में क्या है? नाइट है. लेकिन हमें ये भी पता है कि मून इज ऑल्सो इज अ सेलेस्टियल बॉडी, राइट, एंड इट इज present in the sky. It is a natural satellite of earth also, which keeps on revolving around earth. अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है. तो मून जब यहाँ पर है तो मून इज रिसीविंग लाइट, एंड और ऑब्वियसली इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. तो लाइट रिसीव करी, सम पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड सम पार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. और किसने रिसीव किया? अर्थ ने रिसीव किया. इसी वजह से अर्थ पे हम मून लाइट देख पाते हैं. तो मून लाइट इतनी इंटेंस नहीं होती जितनी सनलाइट होती है. सनलाइट आप डायरेक्ट देख ही नहीं सकते, नॉट एडवाइजेबल. इवन सोलर एक्लिप्स भी नहीं बोला जाता है कि आप देखें, अदरवाइज इट कैन डैमेज योर ऑब्वियसली रेटिना. वो हो सकता है आपका डैमेज हो सकता है. इट कैन कॉज कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑल्सो. तो ये समझ में आया, ये सन है, सन से मून पर लाइट गई एंड इट रिफ्लेक्टेड बैक.
तो हमने यही तो पढ़ा है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन इज व्हाट, दिस इज अ सरफेस, लाइट इज सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स, कहीं से लाइट आ रही है, इट स्ट्राइक्स द सरफेस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, बाउंस बैक. So the direction of the light, you must be seeing that the direction of the light is changed. It is incident ray, this is reflected ray. तो इसे हम क्या बोलते हैं? This phenomenon is known as reflection. जितनी अब हमने मिरर की बात करी, ठीक, बहुत सारी चीजों में आप अपनी इमेज देख सकते हैं, बट देर आर फ्यू थिंग्स वेयर यू विल नॉट सी योर इमेज. आप अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते. ये किसी भी चीज, जैसे मैं आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में कोशिश करूंगी दिखाने की कि यू कैन सी रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन इन अ बेटर मैनर. देखिए, जैसे कि अगर प्लेन ग्लास है तो प्लेन ग्लास विल अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ओके, इफ इट इज नॉट पॉलिश्ड सो यू विल नॉट सी योर ओन रिफ्लेक्शन. बट वही मिरर पे अगर लाइट स्ट्राइक होगी तो यू कैन सी योर ओन रिफ्लेक्शन. तो फॉर रिफ्लेक्शन द सरफेस शुड बी स्मूथ. पहली बात, स्मूथ होनी चाहिए और पॉलिश्ड होनी चाहिए. हाईली पॉलिश्ड सर्फेसेस शो रिफ्लेक्शन. ओके, जैसे स्मूथ एंड पॉलिश्ड, जैसे मेटल सर्फेसेस होती हैं, इफ द मेटल सर्फेस इज नॉट स्क्रैच्ड, इट इज वेरी न्यू, यू कैन सी योर ओन रिफ्लेक्शन. ओके, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट यू कैन सी योर ओन इमेज इनटू इट. ऐसे ही वॉल पे अगर आप देखेंगे तो वॉल विल नॉट शो रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या, आपको अपनी शक्ल नहीं दिख पाएगी वॉल के केस में. ऐसे ही मिरर तो बेस्ट एग्जाम्पल है, तभी मिरर से स्टार्ट किया था, बिकॉज बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होती है. तो ऐसा क्या रीजन है? रीजन ये है कि कुछ सर्फेसेस बिल्कुल स्मूथ होती हैं, इवन होती हैं, तो वहां पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है? बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. ये इंसिडेंट रेज है, दे आर फॉलिंग ऑन स्मूथ सरफेस, शाइनिंग सरफेस, एंड reflection will happen like this. Means all rays, reflected rays will be parallel to each other and all incident rays will be parallel to each other. But जहाँ पे surfaces जो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे surfaces ऐसी रफ नहीं दिखेंगी, बट अगर देखा जाए तो रफ होती है बहुत सारी surfaces. तो वहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन विल नॉट बी इन अ राइट मैनर. कोई रे कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो इस वजह से हम जो है नहीं देख पाते. ये स्मूथ सरफेसेस का है और ये रफ सरफेसेस पर रिफ्लेक्शन ऐसे होता है. ऐसे ही फर्नीचर जो होते हैं, जो दे आर दोज फर्नीचर्स दैट आर हाईली पॉलिश्ड, तो उसमें भी आप क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन देखेंगे. So this is about reflection. Now I want to discuss few questions that were left earlier. NCERT questions are going to be discussed. There are two activities, activity 7 and 8, which you will understand when I will upload the next part of the video. So let's come to the first question. Rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque objects. So this is question number 1, that rearrange the boxes given below to make a sentence that helps us understand opaque objects. So I have arranged so that time will not be wasted. Opaque objects, opaque, A-O-P-A-Q-U-E, opaque objects make shadows. I have written numbers also. You have to arrange in this manner: 3, 4, 5, 6, 2, 7, 1. I am repeating: 3, 4, 5, 6, 2, 7, 1 is the correct order to arrange these boxes to form a statement. Right? And the next question, second question was already done when I was explaining you transparent, translucent, opaque and luminous and non-luminous objects. Now third is, can you think of creating a shape that would give us a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in another way? So for this I am taking binocular, right? A broken binocular I have, and I just want to show you that how the formation of shadow happen, right? And how it could be different also
from the light which is falling on the surface. जैसे ऑब्जेक्ट पे लाइट किसी सरफेस पे पड़ रही है, किस मैनर में पड़ रही है लाइट, किस मैनर में लाइट फॉल कर रही है ऑब्जेक्ट पे, किस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ लाइट, वो शेडो का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि शेडो का शेप कैसा होगा. So right now I am holding a binocular one and you can see that it is appearing what? A cylindrical shape, right? And if I hold it in this manner, so you will find what? A circular shadow, right? Circular shadow दिख रही. Again, this is a marker, right? And if I will hold it like, actually मेरे भी hand की shadow बन रही है. So you can see now that how the shadow is formed, right? And when I am holding like this, the shape of the shadow is changed, right? And you can see this is a duster, right? So you can see the shape, what is the shape of the duster, but it depends upon how I am holding the duster right now. The source of light is falling on it, and now can you say that it is the same shape of the duster? That is why we say that shadows are sometimes misleading also. बिल्कुल square दिख रहा है, right? So this is how we can say that yes, cylindrical surfaces can form a circular as well as rectangular shadow if held in another way. So what we have seen right now, that this is a point source, and this was my cylinder. When light rays strike that opaque object, right, which is cylinder here, what happen? They are unable to pass through it. तो ऐसे निकल जाएगी light. Okay, and what you will have? You will have a circular shadow. ठीक. अब ये क्या है? This is obviously screen है जिसपे ये shadow आपकी बनी है. This is the screen. I hope ये यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को. This is a circular shadow. So what I am doing? I am doing question number 3, and this was my cylinder, and this is a point source. Now the second, in the second manner, यहाँ बना लेते हैं. This is a point source again, point source, and we have the cylinder in this manner now, vertical position. Earlier it was in horizontal position. So you can see the light rays. I have not shown arrows. ऐसे ये light rays पहुंच रही हैं. ठीक. और अब आपको कैसा बनेगा image? Shadow, sorry, आपकी shadow बनेगी ऐसे. ठीक. ये screen पे बन रही है. This is the screen. Now this is the shadow, rectangular shadow. Okay. So this is how we can prove that obviously shadow, the shape of shadow can also be changed. Now next question, in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? So answer will be, what will be the answer? In a completely dark room, they are asking that could you be able to see your own reflection? So we can answer that no, we will not be able to see our reflection, because for reflection to happen, what we need a source of light. So no, reflection will not occur. No, reflection will not occur in a completely dark room. For a reflection to happen, we need a source of light. Then only light rays will be reflected, and you will
see your own reflection into the mirror. So this is about chapter 11. It's completed. Now I will upload a small video for to show you what reflection is actually.